अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त आपका शेख उस्मान और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शहरियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और मेरा नाम है बिलाल अंसारी। नाम भूल गया अपना है। नहीं, मैं क्या बिलाल खाली बता रहे थे अंसारी। नहीं मुझे पता है, ऐसे माहौल में बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, खास तौर पे जब हिसाब किताब हो रहा हो। अच्छा तो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो ये भी है कि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है। काफ़ी हमारा पुराना सब्सक्राइबर जिसका नाम है निशात पटेल, तो इन्होंने इस वीडियो की डिमांड की है। वाडिया फैमिली, वाडिया बिजनेस एम्पायर भी एक सीरीज़ है जिसमें आपको बताया जाता है कि इंडिया के काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो है उनका किस किस मुल्क में बिजनेस है और क्या क्या बिजनेस है। अच्छा, ठीक है। हाँ, काफ़ी इंडिया का एक जो है फेमस बिजनेस जो बहुत टाटा, वो तो टाटा रतन टाटा साहब का बिजनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये अब वो टाटा बिजनेस एम्पायर नहीं, उसके ऑनर का क्या नाम है? रतन टाटा जी। ये वाडिया बिजनेस एम्पायर है कोई, तो ये इसके ऊपर वीडियो तो बगैर आप लोगों का टाइम ज़ाया किया। Here we go. Hello everyone, we have released a motivational book called The Singing Panda. The book is a heartfelt guide to achieve your हर बार goals पता नहीं and क्यों ये success. इस वीडियो में जो है ना, ये सिंगिंग पैंडा की वीडियो को काफ़ी प्रमोट किया गया। Let's begin with our video. भाई जी तैयारी छिक के रखो, अखां खुलन गई ਤੁਹਾਡੀਆਂ। Hello and welcome. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। This time, let's start our journey in America and watch World Series baseball. Before the game, a special song is sung. This song is the US national anthem, which was written way back in 1814 when an amateur poet, Francis Key, was on board HMS Minden ship. The ship HMS Minden was not built in America or the UK, but was actually constructed in Mumbai's famous dockyard. Yes, the US national anthem was written in a made in India ship. The company which constructed HMS Minden is now perhaps India's oldest active conglomerate, Waadia Group. To understand how old is Waadia Group, just imagine that when Waadia Group started its business, the first industrial revolution had not even started. Electricity was considered just a science experiment. बिजली भी नहीं थी उस टाइम। Napoleon Bonaparte was not even born. The journey of Waadia Group began with a letter sent from Mumbai to Surat dated 10th January 1736 when Lavji Waadia, a carpenter and shipbuilder, was invited by the British to Mumbai to build ships. Lavji soon arrived in Mumbai and went on to oversee the construction of Bombay Dockyard, Asia's first dry dock. He and later his descendants built 355 vessels in over 160 years. Such was the quality of their ships that the world's second oldest surviving warship, HMS Trincomalee, is also built by the Waadia Group. Later, in 1863, Wadia's founded a tea coat trading company which became the second Indian company to be listed on BSE, Asia's oldest stock exchange. Meanwhile, Lavji's great-grandsons JBH Waadia and Homi Waadia, inspired by Indian and Hollywood movies, founded Waadia Movietone in 1933, a movie studio located in Chembur, Mumbai. Many of you will know that India's first talkie film was Alam Ara, released in 1931. But only 2 years later, in 1933, Waadia brothers also released their first talkie, Lale Yaman. Waadia Movietone went on to इन्होंने produce फर्स्ट over टॉकी 20 मूवी और सेकंड टॉकी मूवी इनकी थी। box office hits like Handawali and Miss Frontier Male, starring one of Indian cinema's first female action stars, fearless Nadia. Now, from the world of movies, let's come to the present and see what is today's business empire of the Waadia Group. We will begin in India and reach the scenic Ooty. Around 15 kilometers from here, we will find Waadia Group's 155-hectare Dunsandel Tea Estate, one of the earliest planted tea estates in South India. 155 एकड़ पे खाली इनके टी एस्टेट है। Several more tea estates that include Singapati Estate, in all covering over 2,800 hectares of plantation, producing 8 million kgs of tea annually. Now, let's
let's quickly travel to Africa and reach the vibrant Tanzania. Here, the group owns a 603-hectare JHELUM tea estate which produces over 8 lakh kgs of tea annually. Traveling further to the United States, we will reach the affluent Seattle. Here, the group owns a controlling interest in North America's first exclusively organic tea brand, Choice, that produces over 60 million tea bags every year. After tea, now let's drink some coffee and travel back to visit the picturesque Kurk. Here, the group owns 8 coffee plantation estates totaling 927 hectares of planted coffee and produces about 1,000 tons of coffee per year. Moreover, the group is also one of the leading manufacturers of dental products, weighing machines, and even owns 4 auto components factories in Chennai with clients like Hero Motocorp and TVS Motors. From Chennai, we will momentarily travel to Singapore. Here, the group owns a 4-decade-old horticulture company, Island Horticulture, and has been involved in multiple landscaping projects across Singapore. Now, from Singapore Airport, let's take a flight back to India. We are right now in one of India's youngest airline, Go Air. This airline is also owned by the Waadia Group. Go Air, with around 11% domestic market share, has a fleet of over 50 aircraft, चाय उसकी है, कॉफी उनके पास है. over 76 million passengers since its inception in 2005. Moreover, in India, the group owns the former textile major Bombay Dyeing, which now has transformed into one of India's leading bed and bath retailer with over 350 business है इन्होंने नहीं छड़िया पहला मैंने वो है Waadia Group is also one of the top 4 polyester producers in India with around 15% market share and owns a real estate company, Bombay Realty, which is currently developing prime luxurious projects in Mumbai मतलब कि वो like फर्नीचर the वगैरह Island City भी Center उनके ही हैं. and Wadia International Center. Furthermore, the group also owns a real estate consultancy company, Wadia Techno Engineering, which has been involved in over 1,800 development projects that include Grand Hyatt Hotel in Mumbai and the coveted National Stock Exchange. Not only that, Waadia Group is also the largest manufacturer of hydrogen peroxide in India and also owns Britannia, India's leading food brand. Britannia's biscuit brands like Vita Marie Gold, Good Day, 50-50, Bourbon and Little Heart are household names across India and reach over 50% of Indian homes. Approximately 2 million people buy Britannia food products every day. Britannia is also the top 3 biscuit brand in GCC countries and has also recently set up a greenfield manufacturing plant in Nepal. Now, let's take a break to watch a cricket match. Here, the group jointly owns a stake in the Indian Premier League franchise Kings 11 Punjab. Waadia family also owns the popular fashion and modeling magazine Gladrax, which organizes popular beauty pageants such as Mrs. India and Gladrax Mega Model. Over the years, Waadia family has built 5 RC colonies for low-income families. Their colonies are built on over 35 acres of prime land in Mumbai, housing over 1,500 flats. Now, the land value alone of these properties will be over $1 billion. Moreover, the family has also built an arts and science college, a commerce college, an institute of technology, a management institute, and also a women's and children's hospital in Mumbai. To end this journey, which began 283 years ago, all I can say, this is Waadia family's massive business empire. कैसा लगा? अच्छा तो दोस्तों, तो वीडियो तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा मुझे इससे इन्फॉर्मेशन मिली है. तो सबसे पहले भाई चले यार, सारा कुछ इंग्लिश में था पहले, तो आप बताओ कोई पल्ले पे है कुछ?
पल्ले तो पै गया है, लेकिन एक जड़ी चीज़ है, दिमाग फिर गया। दिमाग फिरने से भाई इतना मतलब कितना अच्छा एक आदमी स्टार्ट कर रहा है। कॉफ़ी उनकी है, उसके बाद टी उनकी है, उसके बाद बहुत से रियल एस्टेट का बिज़नेस है, उसके बाद जो है उनके फ़्लाइट अपनी वो एयर ठीक है, उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह हॉस्पिटल, और देख के एक दफ़ा बंदा हैरान ही होता है कि एक स्टार्ट लेने में बहुत मुश्किल होती है। और ये बिजनेस भी बताया कि 17 कुछ से ये बिजनेस जो है ये शुरू स्टार्ट हो रहा है। वो 230 ईयर्स बन रहे हैं, बताया कि काफ़ी पुराना बिजनेस है। बहुत पुराना बिजनेस है। बहरहाल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बस। अच्छा, तो इसमें कोई आपको काफ़ी कोई अच्छी चीज़ जो लगी जो आप कहना चाहिए कि हाँ भी ये इन्होंने जो काम किया था ये काफ़ी अच्छा किया था इन्होंने? मेरे तो हॉस्पिटल जो इन्होंने बनाया वो औरतों और बच्चों के लिए वो आपको अच्छा लगा? वो सबसे बेस्ट जो है ना, क्योंकि वो एक अच्छा काम भी है, उसके बाद जो है एक सदका जारी है। ठीक, ओके, समझ गया मैं। अच्छा, तो भाई बिलाल आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या बात है आज हमसे कोई रूठे से लग रहे हैं? नहीं है, हम लोग बस यही सोचे थे कि यार सो गाइस वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि वाडा की कितनी ज़्यादा बिजनेस है चाय के, बिस्कुट के, उसके बाद पोलिस्टर वो बनाते हैं होटल से उनके, और उनके साथ साथ वो वेलफेयर का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हॉस्पिटल थे, कॉमर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी उन्होंने बनाई हुई। बिल्कुल ठीक है। तो यही है कि अल्लाह ताला यही है कि एक निज़ाम है यार, आप लोगों को दो, लोग अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको देता है कि जितने आप बड़ा बिजनेस करोगे, आपके जितने अच्छे एम्प्लॉयर होंगे वो करते बिजनेस की एक अच्छी तरक्की में चलते हैं, बिजनेस तरक्की में जाते हैं। और देखो इनका बिजनेस कैसा है कि सिर्फ इंडिया में नहीं है और भी अफ्रीका, अमेरिका, नेपाल, हाँ उनमें सब में था। और चाय की मैं बड़ी ज़बरदस्त, वैसे मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, तो अभी मैं इनकी देखूंगा ऑनलाइन कहीं इनकी कहीं से चाय आती हो तो मंगवाऊंगा। ऑर्गेनिक चाय आप मंगवाना चाहते हैं? और टेस्ट करना चाहते हैं। ये भाईजान वो बंदा है जो लाहौर जनाब से स्पेशल चॉकलेट चाय लेने जाता है। चॉकलेट चाय अच्छा, मंगवाएंगे, सर्च करते हैं जाके। ठीक हो गया। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिली है कि देखो यार उनका बिज़नेस कितना पुराना है, कि जो सबसे इनका जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, वो ब्रिटिश ने इनको बुलाया था कि वो कारपेंटर थे, इन्होंने मेहनत की है, ठीक है, उन्होंने एक शिप बनवाई थी, ठीक है। अब ऐसा ऐसा देखो उन्होंने मेहनत करते करते एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया कि कितनी नस्लें खा रही हैं। बहरहाल ये भी जो बिजनेस एम्पायर था ये भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव था, कोई छोटा मोटा नहीं था लग रहा, और बहुत मतलब कि वसी था। अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, सिटी भी बिजनेस उनके हो तो काफ़ी बहुत बड़ा यार एक बात होती है बंदे की। बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, काइंडली उसको टच कर लीजिएगा। क्या हो गया? टच कर लीजिएगा। अच्छा, और साथ एक सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा होगा, उसको कौन टच करवाएगा? अच्छा, करवा दें, वो भी कर दें भाई जरूर। बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, शुक्र है, याद है कुछ। ठीक है, और अगर आपकी कोई चीज़ की खूबसूरत सी डिमांड है वो आप बिलात कल नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ कोशिश कीजिएगा कि हमें उस वीडियो के लिंक भी देके हमें पता हो कि हमने किस वीडियो पे रिएक्शन देना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के मुझे और इन दोनों को अल्लाह हाफिज़ के।